In class today, our topic is interactions involving microorganisms. As far as the word interaction is concerned, so interaction mean any kind of association, whether temporary or permanent, no matter how transient it is, but it may be called as interaction. तो माइक्रो भी डिपेंडेंट होते हैं ऑन द अदर माइक्रोब्स फॉर देयर सर्वाइवल और फॉर लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। एक तो ये डिपेंडेंस है। सेकेंडली ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर अफेक्ट होता है, चाहे डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। सम टाइम दीज इफेक्ट्स आर परमानेंट एंड सम टाइम दीज इफेक्ट आर टेम्परेरी। So but whether they are permanent or temporary, they are we term them as interactions. Not only microorganisms interact with each other, but they also interact with the animal, with the plants, and even they can act as third party in the interaction between any plant or animal, or in the interaction between animal and animal. So most of the time this interaction, the study of these interactions are very important. Now one very typical example is the different kind of diseases that microbes confer in different plants and animals. So in that kind of negative interaction, when they harm their host, this kind of interactions are very crucial to study for. Sometimes these interactions are really beneficial for us, and we call them as mutualistic association, but in general we term these interaction as symbiosis. Now symbiosis is a general term that we applied whenever two lives that come together, we call them that interaction as symbiosis. Sim mean together and biosis mean life. So when two more than two life come together for positive purpose or for negative purpose, all kind of interactions are termed as symbiosis. Now you already know about lots of symbiotic interaction in the animal and in the plant world, but as far as microbial world is concerned, there are lots of symbiotic interaction as well. But sometimes these symbiotic interactions are very difficult to understand whether they are mutualistic or they are commensalistic. But in general these interactions, most of the time these interactions are mutualistic. So but we shall study these interaction one by one. The very first kind of interaction is competition. We have talked about the competition yesterday, and competition is basically competition arise when two or more organisms compete for the same resource, or they prefer to live the same resource, or they want the same resource, but this resource can be abiotic or the biotic. This can be any nutrient, any particular nutrient, or this can be the living in the preferable place. But so these microorganisms compete with each other to live at that place or for that particular nutrient. In that competition, obviously the outcome of competition is the one of the strain may attain dominance, and the other strain have to live subordinately, or it have to quit that place or exclude that particular region. तो कंपटीशन के नतीजे में, चाहे वो एक सिंगल फैक्टर की वजह से हो, इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन द डोमिनेंस ऑफ वन स्ट्रेन. सम टाइम मोर देन टू स्ट्रेन में cooperate with each other and live happily together, but this occurs rarely. So second kind of interactions are amensalism. Amensalism is basically outcome of competition, and what kind of outcome is when one population leads to dominance, complete dominance over the other, while other population have to abandon that place or have to live subordinately. For example, its example is
if we imagine a lake which is highly saline, बहुत ज़्यादा salt concentration है lake में, then what will happen? The dominant community here will be the halophilic microbes. The halophilic microbes are generally belongs to Archaebacteria. So in general that lake is occupied by the halophilic Archaebacteria. But what will happen if rainfall occurs on that highly saline lake? Then this rainfall causes the dilution of water. तो वो लेक जो बहुत ज़्यादा saline है, अब वो उसकी salinity कम हो गई है. The result will be this kind of rainfall will be catastrophic for the halophilic Archaebacteria. And now the moderately halophilic bacteria, which belong to the class of Eubacteria, they attain the dominance, and the other previously dominant bacteria, they will begin to die, or they will act as subordinate now. Then what will this kind of change is transitory. When the effect of rainfall will disappear and water will evaporate from the lake, then again the high salinity condition will restore, and the again the extremely halophilic Archaebacteria will dominate that place. But whatever the condition may be, amensalism always result in the dominance of one particular kind of strain. Then the next kind of interaction is commensalism. Commensalism is you already know about the commensalism. It's a kind of interaction when whenever the two microbes or two organisms, they are interacting with each other, one organism may get benefit and other is not benefited, and other remains unaffected. Now the competition always commensalism is generally considered as mutualism most of the time, but there are few examples of true commensalism in the microbial community. But most of the time this commensalism later turned out to be mutualism, where both of the microbes get benefit from each other. One of the example is the Arthobacter. These microbe produce Terrigens factors. These Terrigens factor produced as a metabolic byproducts by these Arthobacter, but they are essential for the growth of soil dwelling coniform bacteria. So coniform bacteria getting benefit from the Arthobacter by these Terrigens, but Arthobacters are so far known to have no effect, get no benefit from these coniform, but still this relationship is thought to be mutualistic, because and it is thought that actual picture of this relationship is not yet known. And here the other kind of relationship is mutualism, and mutualism is one of the widespread kind of interaction between the microorganism, where the two microbes get benefit from each other, and it enhance their fitness, it enhance their survival in the given environment. This kind of mutualistic association may be transitory in nature, or this can be permanent type. You might have studied lots of examples of mutualism, like the termites, and the gut of the termites have certain microbes in it, and these microbes help the termite to eat wood, and other kind of mutual and they in turn they get protection, they get food from these termites. The E. coli, the microbes that are living in the gut, although they have the same kind of relationship with us, and the cellulase producing microbes that are present in the gut of cows, in the rumen of cows, they help those cows to digest the cellulose, to eat the wood. In return they get protection and food from the rumen of the cows. तो इस तरह के म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बहुत से हैं
Presently, we have studied about the biofilm, which is actually a microbial consortium. This is the mixed culture of microbes, and we have studied that microbes get benefit from each other while living in this biofilm. These are mutualism is a kind of positive interaction, but still we have lots of negative interaction in the microbial world as well. One kind of interaction which is predominated, this is parasitism. हम सब जानते हैं parasitism को, in which a parasite which is usually very small in size than its host, it live in the body or on the body of a host in the form of intra and extracellular parasite, and they get benefited from its host, but they host get harm from these parasites. host को harm जो है वो मतलब level का हो सकता है, even it may cause death of the its host. Presently we are facing the coronavirus, which is also a microbial parasitism to its human host. इस तरह के इंट्रैक्शंस बहुत से हैं जो कि आप लोगों ने स्टडी किए हैं. समटाइम पैरासिटिक अटैक इज़ बेनिफिशियल फॉर द पॉपुलेशन. फॉर एग्जांपल, इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट पे वेयर बैक्टीरियोफेजेस अटैक द माइक्रोफ्लोरा, तो उसमें क्या होता है कि ये माइक्रोफ्लोरा बैक्टीरियोफेज की वजह से इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है, और डेथ के बाद जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होते हैं, दैट इज़ यूज्ड बाय द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू गेट बेनिफिटेड. तो इस ये दीज काइंड ऑफ इंट्रैक्शंस आर रियली कम्प्लेक्स. यू कैन नॉट mark a boundary that this is a positive interaction and this is a negative interaction. Sometimes positive interactions sometimes negative interaction may also be benefited. The other kind of interaction are predation. In predation, generally the organism that is benefiting, it's a predator, और ये बड़े साइज़ का होता है, जबकि प्रे जो है वो छोटे साइज़ का है, और प्रे इज़ ईटन अप बाय द प्रेडेटर. और जनरली इस तरह के रिलेशनशिप में फ़ायदा जो है वो प्रेडेटर को होता है और प्रे को नुकसान होता है. बट मोस्ट ऑफ द देर आर फ्यू एग्जाम्पल इन द माइक्रोबियल वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, डीलो विब्रियो बैक्टीरियोवोरस, दिस इज़ स्मॉलर देन इट्स प्रे. ये प्रेडेटर है डीलो विब्रियो, और ये अपने प्रे से स्मॉल साइज़ का होता है, एंड इट यूटिलाइज डिफरेंट मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, it produce extensions from its body, and these extensions basically suck up the cytoplasm of its host. और ये छोटे साइज़ का होने के बावजूद अपने होस्ट को अपने प्रे को जो है वो किल कर सकता है. तो these are all different form of interactions, but so far we have studied the kind of interactions which are the direct interactions between the microbes. There are also some indirect interactions between these microbes, and what kind of these indirect interactions are. For example, if microbes are living in the particular environment, and they are producing something as a byproduct, but this something which they are producing is benefiting or harming the other microbes, so this kind of interaction is considered as indirect interactions. Example हम इसके लेंगे during the natural fermentation. What happened in fermentation, that pH falls, generally acids are produced, lactic acid is produced as a result. जब vegetation की decaying हो रही होती है, तो fermentation के ज़रिए क्या होता है, lactic acid produce होता है, which results in the fall of pH. And what will happen, generally this fermentation is initiated by Enterobacteriaceae. They produce acid and causes rise in carbon dioxide, and this acid production create condition for ideal condition for the lactobacillus and the other lactic acid bacteria to come here and utilize these lactic acid which is formed by the Enterobacteriaceae. Now when these lactic acid producing microbes utilize the lactic acid, and all the fermentable substrate is exhausted, it's finished, then what will happen, that lactate utilizing yeast become dominant. And these yeast causes the pH values to rise, and whenever this pH is going to rise, the lactobacillus and the other species of this kind which are inhabitant of the low pH, they will unable to survive in that pH. Now you see कि ये microbial interaction जो है ये indirect है. माइक्रोब जो हैं वो अपनी बाय प्रोडक्ट से पीएच चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्ट्रेन है या डोमिनेंट कम्युनिटी है वो चेंज होती जा रही है.
इसी तरह से कुछ जो एग्ज़ाम्पल हैं वो इसमें एक बहुत टिपिकल एग्ज़ाम्पल इंटर स्पीशीज़ हाइड्रोजन ट्रांसफ़र है। अब ये क्या है, दैट देयर आर सम स्पीशीज़ ऑफ मेथानोजेंस बैक्टीरिया which are which have very efficient hydrogenases. Hydrogenases are those enzymes which are able to oxidize NADH. Here you can see the example. NADH is being oxidized into NAD by the activity of hydrogenases, and these hydrogenases are produced by the bacteria which are methanogens. अब ये मेथानोजेंस जो हैं ये क्या करते हैं, ये NADH को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं NAD में। बट व्हाट विल हैपन कि जब ये ऑक्सीडाइज होता चला जाता है तो हाइड्रोजन लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। अब ये जब हाइड्रोजन लेवल ज़्यादा होता है तो उसके नतीजे में ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलना बंद हो जाता है और अब NADH को मज़ीद ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता। आल्दो NADH मौजूद होता है, NADH से एनर्जी ली जा सकती है, लेकिन इसको ऑक्सीडाइज नहीं किया जा सकता फर्दर जब AH2 की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो जाए। तो इस तरह से ये जो मेथानोजेंस हैं उनको वो क्या काम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा लो हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में भी अपनी एक्टिविटी जारी रख सकते हैं। और वो क्या करते हैं कि जो ये मेथानोजेंस जो हैं वो इस रिएक्शन को इस डायरेक्शन में कैरी आउट कर सकते हैं, इवन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब बहुत कम होती है तब भी, जिसके नतीजे में क्या होता है कि NADH बनता है और ये NADH यूटिलाइज किया जाता है बाय एनारोब्स एंड दे रीऑक्सीडाइज्ड दिस NADH इनटू NAD, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ये एनारोब को फ़ायदा होता है कि उन्हें NADH मिलता रहता है और मेथानोजेंस को ये फ़ायदा होता है कि वो ये हाइड्रोजन जो है उसको यूटिलाइज़ करते चले जाते हैं। इस तरह से ये इंटर स्पीशी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होता है। और इसमें मैं इसको रिपीट कर देती हूँ कि मेथानोजेंस बैक्टीरिया का क्या कर रहे हैं कि उनके पास हाइड्रोजिनेजेस हैं और ये एंजाइम जो हैं वो इतने एडाप्ट हैं कि वो वेरी लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में भी जो है वो रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हैं। अब जो एनारोब्स हैं मेथानोजेंस के साथ काउंटर पार्ट हैं एनारोब्स। दीज एनारोब्स आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज दिस NADH इनटू NAD। जब ज़्यादातर कंडीशन में वो NADH को NAD में ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब हाइड्रोजन आयन आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में तब चलेगा जब न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन जब ये कम होंगे, प्रोडक्ट्स कम होगी, रिएक्टेंट हाई होगा, तब ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगा और NADH से NAD बनेगा। लेकिन जब प्रोडक्ट्स बिल्डअप होना शुरू हो जाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चलेगा। तो मेथानोजेंस क्या करते हैं कि वो इस हाइड्रोजन को यूज़ करते चले जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन यूज़ होती चली जाएगी तो रिएक्टेंट्स जो हैं, जो प्रोडक्ट्स बन रही हैं दीज टू, ये प्रोडक्ट्स कम हो जाएंगी और ये रिएक्शन जो है एनारोब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकेंगे। तो इस तरह से ये इंटर स्पीशी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र में माइक्रोब जो है वो एक दूसरे से बेनिफिशियल इफेक्ट जो है वो गेन कर रहे हैं। तो आप लोगों ने इस सारे को पढ़ लेना है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके साथ ही आपका आज का लेक्चर फिनिश होता है। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है। हम कुछ तरतीब करते हैं कि आप लोगों की इसकी बाकायदा कुछ फीडबैक भी लिया जाए इसके हवाले से।